Everyone. I hope you all fine. Today we are going to study the science factor of class 5. Now open your book, page number 9, circulatory system. As we already did nervous system in class, today we will discuss about circulatory system. Before explaining this concept, I will start with the reading. The circulatory system is the system that sends oxygen and nutrients around the body to all the cells and take away waste material. The main parts of the circulatory system are the heart, blood and blood vessel. This line should be underlined. I'm repeated again. The main parts of the circulatory system are the heart, blood and blood vessels. The heart pumps blood around the body. The blood travels in tubes called blood vessels. This line should be underlined. The blood travels in tubes called blood vessels. There are 3 types of blood vessels: arteries, veins and capillaries. Now move to the next paragraph. Arteries carry blood away from the heart to other organs and tissues in the body. This line should be underlined. Arteries carry blood away from the heart to other organs and tissues in the body. Veins carry blood to the heart. This line should be underlined. This line is also should be underlined. I am repeated again. Veins carry blood to the heart. Capillaries are very small blood vessels that link the veins and the arteries. This line should be also underlined. Capillaries are very small blood vessels that link the vein and the arteries. Now I will explain with the flow chart. This is today our topic is circulatory system. What is circulatory system? I guess you already did this topic in your previous class. I will tell you again. It transports oxygenated blood and nutrients throughout the body. ये इसका फंक्शन है. मेन पर्पस सर्कुलेटरी सिस्टम का है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी ऑर्गन्स को देते हैं. ये सिस्टम. अब one question comes in our mind. Where do we get oxygen and where do we get nutrients? So, I will give you the answer. We get oxygen from the lungs. This is the lungs. These are lungs. And from where do we get nutrients? We get nutrients from the digestive system. Because हमें पता है कि स्टमक में फूड ब्रेक डाउन होता है and then it turns into the nutrients. So we get oxygen from the lungs and nutrients from the digestive system. So now circulatory system has 3 components. Has 3 main parts. The first main part is heart, right? This is heart. Now second is blood and third is
blood vessels. Okay, I'll tell. Blood vessel is divided further. Artery. The first blood vessel is artery. Second is vein. And third is capillary. Okay, now the question raises here, what is the function of these blood vessels? Blood vessels are tubes present in your body, and blood carry and away from the heart through these vessels, and also the third vessel, blood vessel, links vein and arteries. So first I'll tell you about the artery. Arteries carry blood away from the heart. आर्टरी ऐसी ट्यूब है जो ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाती है. वेन वो ट्यूब है जो ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आती है. एंड कैपिलरी वो है जो इन दोनों के को लिंक करती है, जॉइन करती है. इट जॉइन आर्टरी एंड वेन. ओके, नाउ हार्ट का मूव टू द हार्ट. हाउ डज इट वर्क्स, राइट? बिफोर आई एक्सप्लेन before I explain how the heart works, we will read this topic. The heart is divided into 4 chambers. The heart is divided into 4 chambers. The first point, the right atrium and left atrium are the upper chambers of the heart. The right ventricle and left ventricle are the lower chambers. Turn the page. The right and left sides of the heart are separated by a wall called the septum. This line should be underlined. The right and left sides of the heart are separated by a wall called the septum. On the right side, the atrium fills with blood from the body. This blood is low in oxygen, so it is pushed into the right ventricle and then to the lungs, where it picks up oxygen and gets rid of its carbon dioxide. Now move to the last paragraph. On the left side, the atrium fills with oxygen-rich blood from the lungs. This is then pumped into the left ventricle and out round the body to provide cells with the oxygen and other nutrients they need. Okay, I will explain this topic with the help of diagram. This is the heart. How heart it works? It is the blood entered from the vein. This is a vein. As I say before that vein. Okay. So as I say before that vein carry blood to heart. जो blood है वो यहाँ से enter होता है इस vein के through. This is the vein, right? This vein. Heart has 4 chambers. The upper chambers called, these 2 upper chambers called atriums. These 2 upper chambers called atriums. Okay, that's the right atrium and left atrium.
The blood enters the heart from the vein. This is the vein. Then it pushes toward the right. Then right atrium, the blood it opens the wall. वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. यहाँ पे वॉल्व होता है जो अंदर यहाँ से ब्लड को पुश करता है. वॉल्व का पर्पस होता है जो ब्लड को पुश करता है राइट वेंट्रिकल की तरफ. सो ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम इट गोज टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द वॉल. ओके, अब ये जो ब्लड एंटर हुआ है राइट साइड पे, ये है विदाउट ऑक्सीजन. इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है. सो फ्रॉम वेयर वी गेट ऑक्सीजन? वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स. यहाँ से ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है थ्रू द आर्टरी. This is the artery. This is the vein. आर्टरी से ब्लड बाहर की तरफ जाता है हार्ट के. अब लंग्स से it brings oxygen. Then it enters from the another vein, that is here. This is another vein. एंड यहाँ से ब्लड जो एंटर होता है वो ऑक्सीजनेटेड. यहाँ जो ब्लड था वो डीऑक्सीजनेटेड था जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी. लेकिन यहाँ पे जो ब्लड आया है वो ऑक्सीजनेटेड है. क्यों? क्योंकि वो लंग से पास ऑन होके आया है. यहाँ से एंटर हुआ एंड कहाँ गया? फर्स्ट थिंग लेफ्ट एट्रियम में. कहाँ? दिस इज द लेफ्ट एट्रियम. Then here it is valve contract, वो open होता है and then pushes the blood to left ventricle. It enters to the left ventricle. अब ये blood जो है ये ऑक्सीजन वाला है and then it goes to the body through second artery. This is the main artery. It is also called aorta. इस आर्टरी से ब्लड बॉडी पार्ट्स में चला जाता है और वो वाला जो ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाता है दिस इज द ऑक्सीजनेटेड एंड rich amount of nutrients in it. वो वहाँ उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन होती है जो पूरी बॉडी पार्ट्स में, पूरे बॉडी ऑर्गन्स को वो ब्लड पंप होता है. ये ब्लड सर्कुलेशन विद इन द सेकेंड्स होती है एंड सो इन दिस वे ब्लड पंप थ्रू आउट द बॉडी and it transported oxygen and as well nutrients to all part of the body. So further explanation about this topic you will able to see in the end of the video. Comprises the heart, blood and blood vessels. It transports blood, oxygen and nutrients throughout the body and carries away waste products. The heart pumps blood around the body. The blood goes to other parts of the body in tubes called blood vessels. Arteries, veins, and capillaries are the 3 types of blood vessels. Click on any of the labels to know about that blood vessel. The veins carry deoxygenated blood from other parts of the body to the heart. The arteries carry oxygen-rich blood away from the heart to other organs and tissues in the body. The capillaries are very small blood vessels that link veins to arteries. Click on the heart to know more about it.
The heart is divided into four chambers. The two upper chambers of the heart are known as atriums. The two lower chambers of the heart are known as ventricles. The right side and the left side of the heart are separated by a wall called septum. Let us now see how the heart works. Impure blood from different parts of the body enters the right atrium. This blood is low in oxygen. It is pushed into the right ventricle. From the right ventricle, this blood enters the lungs where it receives oxygen and gets rid of the carbon dioxide. From the lungs, the oxygen-rich blood enters the left atrium. It is then pumped into the left ventricle. From the left ventricle, the oxygen-rich blood travels around the body through arteries to provide cells with oxygen and other nutrients. At the same time, it collects carbon dioxide and waste material from the cells and again goes into the right atrium. In this way, the blood circulation continues in the body. Do you know how to check your pulse? You can feel your pulse by gently pressing an artery in your wrist, called the radial artery. As you press the artery, you will feel it pulsating or beating. Click the back button to go to the first. I hope you will learn about circulatory system clearly. Now open your copies. We will do question answers and worksheet on that. Okay, answer these questions. Question number 1. What makes up the circulatory system? It is made up of the heart, blood and blood vessels. Question number 2. What is the function of the circulatory system? As I already told you, it transports oxygenated blood and nutrients throughout the body and take away waste materials. Now move to question number 3. Name the 3 types of blood vessels. इसका जो आंसर है वो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, आप भी वैसे बना लें. ब्लड वेसल की 3 टाइप्स हैं: arteries, vein, capillaries. Okay, now we will do a worksheet. Worksheet. This is the worksheet of circulatory system and this is the heart. आप ये हार्ट अपनी कॉपी पे बनाएंगे, ठीक है, एंड स्टार्ट विद द लेबलिंग. स्टार्ट करते हैं हम लेबलिंग के साथ. द फर्स्ट लेबलिंग, द ब्लड कहाँ से एंटर होता है? वेन से. सो we will label here, we write vein. Then vein से कहाँ जाता है? अच्छा, first you tell me, first there are 4 chambers, right? These are 2 chambers, these are another 2 chambers. These are upper and these are lower, right? ये ऊपर, ये दो ऊपर के हैं, अपर है, और ये लोअर है. और यहाँ पे इन दोनों चैम्बर और लेफ़्ट और राइट को डिवाइड करता है सेप्टम, राइट? सो वेन के बाद ब्लड कहाँ एंटर हुआ एंड कहाँ गया? राइट एट्रियम. दिस इज द राइट एट्रियम. राइट एट्रियम.
फिर उसके बाद ये क्या है, जब राइट एट्रियम से ब्लड, ये वॉल्व, दिस इज द वॉल्व ओपन होगा, ब्लड पुश करेगा राइट वेंट्रिकल, दिस इज द राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ राइट वेंट्रिकल से वो आर्टरी के थ्रू कहाँ गया, ये क्या है, आर्टरी के थ्रू कहाँ गया, लंग्स में, जहाँ से उसने ऑक्सीजन कैरी किया, जहाँ से ऑक्सीजन लेके वो दोबारा वेन से एंटर हुआ लेकिन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सो दोनों राइट और लेफ्ट को सेपरेट करता है दरमियान में सेप्टम, दिस इज द सेप्टम। ओके, दिस इज द वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया। उसके बाद सॉरी, दिस इज नॉट अ राइट, दिस इज अ लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसके बाद फिर वॉल्व ओपन हुआ, ब्लड पुशेस टुवर्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से आपका इस वेन, इस आर्टरी के थ्रू बॉडी में गया, क्योंकि वेन ब्लड अंदर हार्ट में लेके आता है और आर्टरी ब्लड बॉडी में लेके जाती है। सो दिस इज हाउ हार्ट वर्क्स। ये डायग्राम आपने कॉपी पे बनानी है। उसके बाद sorry, I forget here, I did not mention artery जिसके थ्रू ब्लड, ये मेन आर्टरी है, इसके थ्रू ब्लड बॉडी में जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट। जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, राइट एट्रियम इट कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लेता है और enter into through the vein. Right ventricle, it pumps deoxygenated blood to lungs where it picks up oxygen. फिर then right ventricle deoxygenated blood lungs को देता है जहाँ से वो ऑक्सीजन पिक करता है थ्रू आर्टरी। सेप्टम क्या है, जो डिवाइड करता है, दिस डिवाइड द राइट एंड लेफ्ट साइड। The right and left side of the heart are separated by a wall. Then fourth function, the left atrium, it collects oxygenated blood from lungs. वो oxygenated blood lungs से लेता है through the vein, इस vein से। Then left ventricle, it supplies oxygenated blood through arteries to the body. Then इस left ventricle से through artery blood body में supply करता है ये left ventricle. That's all. Thank you.